फॉरेन फिल्म्स की ओर से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर जो फिल्म रिलीज की जा रही है, वीर सावरकर बहुत प्रचलित व्यक्ति रहे हैं, और इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर हमारे साथ हैं रणदीप जी। रणदीप जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज न्यूजीलैंड तक पहुंच रही है, इस बात बारे में मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर या खुद एनेबलिंग इट। या एंड थैंक यू फॉर टेकिंग अप ऑन दिस वंडरफुल सब्जेक्ट, बिकॉज आई गेस ये फिल्म अपने आप एक ऐतिहासिक फिल्म हो सकती है जो हिंदी मराठी दर्शकों को भाएगी, और कई दिनों तक हम इतिहास में जो देखते आए हैं वो शायद फिल्मी पर्दे पर देखने वाले। तो ये साहस कैसे हुआ आपके साथ? ये साहस इसीलिए हुआ क्योंकि जब मेरे पास ये मूवी आई, और मैं तो हिस्ट्री का बहुत बड़ा स्टूडेंट मानता था अपने आप को। एंड आई हम्म। ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट वीर सावरकर एट ऑल, एक्सेप्ट फॉर वीर सावरकर, काला पानी, एंड दैट वाज अबाउट इट. So that made me हम्म। really curious. And then I starting researching further, and I discovered a whole, you know, treasure chest of history and information, which was in a way hidden from us for some reason. I felt, हम्म। and then once I realized what a giant of an intellect he was, what all his contributions were, what all sacrifices and absolute hell he went through, and I said, why is this man not glorified, uh, so that he's in every person's heart? So that kind of put forth a challenge. एंड लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, उन्होंने कहा, भाई ये मत करो पिक्चर, इससे तुम किसी पार्टी के हो जाओगे, संगी एक्टर माने जाओगे, ये माना जाएगा, वो माना जाएगा। मैं कहा यार, वो उस वक्त की कहानी है जब ये सब चीजें नहीं थी। तो उस आदमी को आज आज के सिनारियों से नाप तोल के एक टैग दे देना इज अ वेरी अनफेयर थिंग, एंड दैट्स व्हाई आई टुक अप दिस चैलेंज. And I put 2 years of my life. I've not done anything else, and uh, try to make this movie a modern movie which gets across to people. ताकि आज आजकल कोई नहीं चाहता कि कोई देशभक्ति का भाषण दे या स्वतंत्रता के ऊपर कोई ज्ञान पेले। तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर टाइप की मूवी बनाई है, which will I'm hoping will get across to younger people, because that's the people that's uh, the demographic of people I really wanted to get across to. Know your heroes. Read all history, and see that they were just not uh, non-violence that was prevalent in the country's freedom struggle, but there was a very engaging, secretive, armed revolution that also happened. And to just credit non-violence to winning our freedom is only to that is a bit of a disservice to thousands of people who took up arms and dared to face the British in self-defense with violence. 22 मार्च को सिनेमाघर में ये फिल्म लोग जरूर देखेंगे, और जैसे आपने कहा कि फिल्म में अलग पहलू है, इतिहास भी है और एक नया कॉन्सेप्ट भी है। और साथ ही में आपने जिन लोगों से काम किया उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो मतलब कि एक फिल्म के लिए जरूरी है कि बाकी के सहयोगी कलाकार का भी योगदान इतना ही महत्वपूर्ण है ना? Yeah, so my actors, my co-actors and my actors as directors, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने कोशिश की थी, पराग मेहता मेरा कास्टिंग डायरेक्टर है, उसके साथ मैंने कोशिश की थी कि मैं, फर्स्ट प्रायोरिटी वाज कि शक्ल थोड़ी मिलनी चाहिए ताकि हम हम्म। एक रियलिज्म को इवोक कर सकें। दूसरा, इट वाज अ वेरी हार्ड एंड लॉन्ग कास्टिंग प्रोसेस, but we managed. And when you look at the trailer itself, it looks like they are real characters because they look so much alike, the real characters. Then came the point of कि इसको shoot कैसे करेंगे. So I did not want those still frames like they were in Richard Attenborough's Gandhi, which was made in the 80s. And the world has changed, and it's about the opposing ideology. So I had a lot of, aggressive movements with the camera. Then I had a great production designer in Nilesh Bagh, and Sachin Lovelekar did the costumes. Renuka Pillai made these characters really come alive with the makeup. And then my VFX team, White Apple, and my whole crew and my cast, they've been wonderful. I was starving
I was hungry all the time, and it went on for 2 years. And there's a new term for it called hangry. सो इसमें मेरी तकलीफें इतनी ज्यादा नहीं थी, जिन लोगों ने मुझे झेला है मैं उनकी दाद देना चाहूंगा, एंड दैट्स माय होल कास्ट एंड क्रू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। अक्सर इंटरव्यू में हम ये पूछ नहीं पाते क्योंकि डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, हीरो अलग होते हैं, या कहीं म्यूजिक डायरेक्टर से बात करते हैं, लेकिन हाउ डज इट एक्चुअली वर्क व्हेन यू हैड टू be behind the camera, well, as a director, to see that shot and then go in front of the camera to act? वो कैसे आपने मैनेज किया? देखिए, मैं 2 दशक से ज्यादा से एक्टिंग कर रहा हूँ। इट्स बीन 2 decades, so I have never gone and डेफिनेटली। looked at myself in the monitor ever. One knows it, and then of course there's a director on there, and you just एक look exchange होता है, or you yourself feel that I could do better, or I didn't quite touch it enough, and you ask for another take. So that was not a very big problem for me, because I written it also, so I knew it inside out. And but of course, you have to not just be present as an actor; you have to look at other things. So it was just, I guess, practice over the years, which I was able to do it. And oftentimes I used to forget to take my own shots, so I had to be reminded that hey, you are the hero of the picture and you're playing the central character. And I should say, oh damn, now let's put some makeup. Indeed, well done. Well, look, you studied in Australia, so you know how people of Australia and New Zealand would react to this film, and I think it's timely कि ऐसी फिल्म और ऐसे व्यक्तित्व को जिनका इतिहास बहुत बड़ा है, और डेफिनेटली हमारे सिने गोवर्स के लिए ट्रीट रहेगा ये फिल्म देखने के लिए, और आपके और आपकी टीम के इस प्रयास के लिए वेल डन एंड ऑल द बेस्ट कहेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस जाके इस फिल्म को, जहाँ कहीं से भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, I'm sure it will get to India and other parts of the world as well, and people will go and watch this film of yours, and ये एक ऐसी स्टोरी है जो हम सब कुछ इससे और भी सीख पाएंगे। हाँ, मैं चाहता हूं कि ये फिल्म एक मूवमेंट बने, ना ही सिर्फ सावरकर जी को लोगों तक पहुंचाने की, बल्कि और ऐसे हजारों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना चाहिए, freedom हम्म। fighters. And just like what the British did to Aborigines and British did to Maoris in the islands of Australia and New Zealand, they did much worse in India. It's just that our population was too large for them to totally wipe out. And our culture, our Hinduness, our civilization survived that onslaught. Definitely. Well, we wish you all the best, as I said earlier, and I'm sure this film will do great wonders, and a lot of people will appreciate your efforts, and we will look forward to seeing it on the big screen. Thank you. Thank you very much for listening in, for having me on your show, and for your audience to listen in. Go watch the movie and decide for yourself whether Mr. Savarkar was Veer or not. Definitely. Thank you so much, Randeep ji. Thank you. Thank you very much.